Hello guys, this is Rahul Sandhi and welcome to RD Mechanical. Topic for now is TH graph for steam generation, and this operation is carried out in constant pressure. Why it is carried out in constant pressure, I'll tell you later. Okay, so let's get started. Okay guys, TH graph, I'll discuss it, the TH graph. Before it, what is steam generation? Okay, formation of steam. Okay, and why should it carried out constant pressure? Okay, suppose there is an ice cube. Okay, when we apply heat to it, okay, it's get melt, converted to water, and then if again we supply heat to it, we continuously supply heat to it, it changes to vapor. Obviously liquid changes to vapor, and then vapor changes to superheated steam. Okay, this is the formation of steam. This process, the whole process is carried out in constant pressure. This is because we know that PV equal to nRT, where P is directly proportional to temperature. Okay, I'll discuss it where it comes from in thermodynamics. Okay, till then you know that P is directly proportional to temperature. If pressure increasing, temperature eventually get increased. Okay, okay, so you keep it in mind that अगर हम लोग ये प्रेशर चेंज करते हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा. इसलिए हम लोग ये पूरा प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर में लेके चलते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अपनी जगह पे हो. ओके, सो सपोज वी आर हैविंग अ बीकर. ओके, दिस इज an open beaker and we are having an ice cube in it. Okay, suppose this is a ice cube. Okay, and now we are applying heat to this beaker by any source of heat, you will say. Okay, we are applying heat to it. When we apply heat to it, it gets start melting. Okay, so suppose initially it has -10 डिग्री सेंटीग्रेड. इन -10 डिग्री सेंटीग्रेड जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों को पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री. 0 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तभी आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है. -डिग्री में आइस मेल्ट नहीं होता है, आइस सॉलिड फॉर्म में ही रहता है. सो इनिशियली लेट सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, एंड स्लोली आई एम गोइंग टू increase the temperature. Suppose it goes to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, it start melting. Okay, it's not instantaneous get melt but it start melting. ये धीरे धीरे मेल्ट होगा 0 डिग्री पे. पूरा आइस क्यूब को मेल्ट होने में टाइम लगेगा. सो कुछ देर तक 0 डिग्री पे ये पूरा आइस मेल्ट होगा और हम लोग को लिक्विड मिल जाएगा. लिक्विड मीन्स वाटर. ओके, जब ये आइस मेल्ट होगा तो हम लोग को वाटर मिल जाएगा. अगेन वी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर इंक्रीज होकर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है सॉरी, जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है तो ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम लोग कॉन्स्टेंटली रखते हैं, अब ये इवेंचुअली तो बॉयल नहीं हो सकता, क्योंकि ये इवेंचुअली बॉयल होने का मतलब है कि अगर हम लोग 1 लीटर का पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, वो अचानक से वेपर तो नहीं बन सकता. वो हीट गेन करेगा, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा, और 1 लीटर वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा. हम लोग को कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उसको रखना पड़ेगा, तब वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में वेपर बन जाता है. ये जो प्रोसेस है, ओके,
ये जो प्रोसेस है, ओके, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और धीरे धीरे इंथैल्पी इंक्रीज करता है, ठीक है। इंथैल्पी इज द हीट ऑफ द सिस्टम, होल सिस्टम, ओके। जब ये हीट, ये किस तरह से हीट गेन करता है, किस तरह से बॉइलिंग स्टार्ट होता है, ओके। इंथैल्पी इज ऑल्सो इंथैल्पी इज ऑल्सो यू कैन से इंटरनल हीट एनर्जी, ओके। सो जब ये इंथैल्पी जब चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, जब एक आइस को हम लोग मेल्ट कराते हैं और उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कैसे चेंज होता है वो देखना कि उस ग्राफ में ये कैसे शो करता है, ओके। सो मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, लेट्स सी हाउ इट्स फॉर्म, ओके। और ये सपोज कर लो कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है, एट 1 atm, ओके। ये प्रेशर इसका कांस्टेंट है एट 1 atm, ओके। प्रेशर हम लोग क्यों कांस्टेंट रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर हम लोग इसलिए कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो आइस है वो प्रेशर के साथ चेंज हो जाता है। As I already told you that P is directly proportional to T, so you have to know that pressure should be constant while doing this operation, okay. So when we applying heat and temperature increasing, how the enthalpy increasing and how it's get converted to a superheated steam, okay, okay. Okay, so this is the TS diagram, okay, or you can say graph, okay. I made it for you. Now what happening here, as I previously told you, that when temperature is rising, this is temperature and this is specific enthalpy, okay. The y-axis is temperature and x-axis is specific enthalpy, okay. So this is temperature column, okay. X-axis, when we going from here to here, temperature increasing, when we going from here to here, and the enthalpy is increasing, okay. So let's see, first we took a ice cube, okay. So when it was, suppose minus 10 degree was the initial temperature at starting point A is the starting point, okay, where temperature is minus 10 degree, okay. तो in minus 10 degree, जब माइनस 10 डिग्री होगा तो ऑब्वियस है कि 0 डिग्री से नीचे माइनस में तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, आइस फॉर्म में ही रहेगा, ओके। अब धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, व्हेन स्लोली आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके। अब माइनस 10 डिग्री से जब 0 डिग्री पे जाएगा, ओके, तो माइनस 10 से माइनस 9, माइनस 8, माइनस 7, तब भी वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। वो चेंज होना स्टार्ट होगा कब, जब वो 0 डिग्री पे आएगा, ओके, या 0 डिग्री के ऊपर जाएगा। सो दिस लाइन shows you temperature versus enthalpy is directly proportional, okay. When minus 10 to 0 degree and the ice is remains still solid, okay, then it is directly proportional to, H is directly proportional to temperature, okay. This stands because we are taking pressure is constant, as I told you that we are, whatever we are doing in this graph, pressure is constant by keeping the pressure constant, okay. Otherwise the boiling point of the liquid get changed due to the change in pressure, okay. So जब हम लोग 0 डिग्री पर पहुंचते हैं, जब 0 डिग्री पर पहुंचते हैं तो मेल्टिंग स्टार्ट होता है, ओके। melting begins, okay. And when in 0 degree, when temperature constant at 0 degree, it start melting, it's going on melting, okay. Because अब देखो कि कोई भी अगर एक आइस क्यूब है, ओके, वो लोग उसको हम अगर हम 0 डिग्री पर रख दें तो वो डायरेक्टली मेल्ट होके लिक्विड नहीं बन जाता, वो स्लोली स्लोली मेल्ट होता है, ओके। सो अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ वी टेक द टेम्परेचर कांस्टेंट एट 0 डिग्री, इट्स टेक टाइम टू गेट मेल्ट, okay. It's not instantaneously melt into liquid, it's slowly melt to liquid, okay. So this is the starting point of melting and it goes on melting and reaches to C, where the point C is saturated liquid, okay. Saturated liquid means there is no solid particles remains left, okay. वो अब आइस नहीं है, वो फुल्ली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, okay. So B is the melting point, okay, where it start melting, and C is the saturated liquid point, okay, at 0 degree centigrade. This
this gap, the time between start melting to get the saturated liquid, this is called latent heat of fusion. आप यहाँ से डेफिनेशन भी इस तरह से आप डेफिनेशन भी इसके याद कर सकते हो या मेमोराइज कर सकते हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब 0 डिग्री से मेल्ट करना स्टार्ट होता है और सेचुरेटेड लिक्विड जब फुल्ली मेल्ट हो जाता है, उस बीच में जो इंथैल्पी चेंज होता है HB to HC, उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ओके, सो -10 डिग्री से 0 डिग्री में वो सॉलिड था, फिर स्टार्ट मेल्टिंग एट 0 डिग्री, B to C स्टार्ट मेल्टिंग। ओके, आफ्टर C के बाद क्या होता है, व्हेन वी अप्लाइंग मोर हीट, व्हेन वी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, सो पॉइंट C पे सेचुरेटेड लिक्विड है, नाउ इट्स गेटिंग हीट। ओके, वो गर्म हो रहा है, अब वो लिक्विड जो है वो गर्म हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली तो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता है। एक अगर लिक्विड को हम लोग कोई सोर्स ऑफ हीट के ऊपर अगर उसको रख दिया जाए एक लिक्विड को, तो सडनली बॉयल करना स्टार्ट नहीं होता है। इट्स itself gaining heat and when it reaches to its boiling point it start boiling। ओके, सो क्या होता है, जब C से वो हीट लेना स्टार्ट करता है, वो स्टिल लिक्विड स्टेट में ही होता है, वो स्टिल लिक्विड स्टेट में ही है। अब जब वो D पॉइंट पे पहुंच जाता है विच इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, बॉइलिंग स्टार्ट होता है। जब यहाँ से बॉइलिंग स्टार्ट होना शुरू होता है, ओके, जब यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट होना शुरू होता है, तो अब क्या है कि इट विल ऑल्सो टेक टाइम। अब किसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 1 kg या फिर 1 गैलन वाटर हम लोग रख देते हैं, वो जस्ट 100 डिग्री रीच करने पे ही तो वेपर बन के नहीं उड़ सकता, वो स्लोली वेपर बनना स्टार्ट होता है। ओके, सो D पॉइंट पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है, इट्स ओके, तो D पे स्टार्ट होता है बॉइलिंग होना। नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स बॉइलिंग, वो हीट गेन कर रहा है, बॉयल हो रहा है, इट्स टेक टाइम, स्लोली इट्स गेटिंग बॉइल्ड। ओके, then it reaches to E point। now you can see that at E point it is saturated steam। okay, when whole water is boiled and converted into steam, okay, it started converting from liquid to vapor, then it begins and then goes to it when the whole amount of water converted to steam। so E is the point where we get a saturated steam, when the whole water is changed into steam। okay, you can say that when it's gaining from C to D at liquid state, when the liquid is gaining heat, okay, when the liquid is gaining heat and reaches to the boiling point, this change in enthalpy, this gap is known as sensible heat। you can get the definition from here itself। okay, you don't have to make the notes for extra to memorize the definition। okay, so now after D it's getting boiling, and then at point E we have saturated steam, whole water is converted into steam। okay, now after that let's see, from D to E enthalpy HD to HE। okay, this enthalpy change when boiling starts to the saturated vapor form, when it converted fully in saturated vapor form, this enthalpy change is called latent heat of vaporization। okay, तो आप देख सकते हो बॉइलिंग और मेल्टिंग में ये कॉमन चीज़ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जब मेल्टिंग स्टार्ट होता है और कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, जब सेचुरेटेड लिक्विड मिलता है, उसके बीच का जो इंथैल्पी चेंज है उसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जब बॉइलिंग स्टार्ट होता है और सेचुरेटेड वेपर हम लोग को मिल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, देन द टर्म इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, and when it's gaining heat it's sensible heat, when the vapor form gaining heat sensible superheating, it's as simple as it is। okay, so after point E the gaseous state। okay, so it is in gaseous state, obviously it's a vapor form, it's a steam form, it's a saturated steam। then when we are applying heat, okay, air temperature increasing and the vapor gaining heat at a certain temperature which is 250 or above temperature, it's become superheated steam, which is generally used in power generation, I already discussed it। okay, so this is the TH diagram
Okay, this is the temperature enthalpy diagram of steam formation. Okay, in competitive exam many questions are asked from this diagram or in this graph. Okay, so okay, I'm going aside so that if you need you can take a screenshot, okay, or prepare your notes. Okay,